उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में, अपने अधिकारों की पहचान में, इनकी कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अपार हिम्मत में और देश से न्याय की अपेक्षा में हमारे संविधान की ज्योत जल रही है। मैंने हमारे संविधान की ज्योत को जलते हुए देखा है और इसके साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में
जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि जमीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को यह अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन to reply the discussion. So let me first thank you for coming over to be here as a part of this discussion and lead it from the chair, despite and unmindful of your requirement of rest and so on. I'm indeed grateful for your presence. Health and economy sometimes suffer similar challenges. Thank you. We have to rise to the occasion. Sir, I'm indeed grateful that 24 members of this House have participated in this debate. And I'd like to start from saying that in 23-24 budget, I had mentioned that to improve, I quote, to improve bank governance and enhance investor protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India are proposed. That was in the 2024 budget. And we are actually having taken a bit of time between the two houses and also before presenting it to the Lok Sabha. We had worked on this banking amendment bill, which is unique at the same time significant in some few ways. This is an amendment bill which is coming in, which is on 8 different themes. I spoke about protection of
account holders' interests, and also simplification and so on. This particular banking laws amendment bill, sir, will have an impact on 5 different acts. It's unique in that sense, and it's unique that 8 different themes of amendments, meaning amendments for one particular theme and amendment for another particular thing, and so on. 8 different themes are being covered to attain the purpose which was stated in the budget speech. 19 sections in these 5 acts will be touched, and therefore I want to first of all say there are 5 acts: the Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act of 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1978. These are the 5 acts on which the proposed amendments will have an impact, and they spread on 8 different reasons as to why we are doing these. Before I get to specifics of what are these amendments, I want to just place it for the record and also to recall the members from their memory that from 2014, when our banks were under severe stress which were built up, excessive stress which was built up over several years, particularly on the loan portfolios, had reached a situation of crisis, and our economy anyway had reached the fragile 5 position. So, in order to address the major banking crisis related matters, reforms were undertaken. We implemented the Enhanced Access and Service Excellence, short acronym being EASE, Enhanced Access and Service Excellence. EASE was brought in the banks. We enacted the Insolvency and Bankruptcy Code in 2016. We also put in place a very robust banking governance framework. We set up the National Asset Reconstruction Company, the NARCL, and then we also undertook amalgamation of public sector banks, and these are few of those significant steps taken to restore banks to good health. So the gross NPAs, the outcomes are really there for all of us to see. The gross NPAs of scheduled commercial banks were at a multi-year low of 2.5% in September 2024. So those measures began from 2014, and today when we are in 2024, September 24, some months ago, the multi-year low level of gross NPA of 2.5% has already been reached. System level capital to risk weighted asset ratio, which is known as CRAR, of 16.7% in September 2024 was also achieved, and it is well above the regulatory minimum level, meaning if we had reached a certain level that would have been sufficient. We improved on it and have bettered it. So the steps taken under the leadership of the Prime Minister in getting the banks to some kind of good health are showing results across various indicators which measure the health of the banks. Public sector banks have also recorded the highest ever net profit of 1.41 lakh crores in the previous financial year. And if that is the level at which they had achieved profitability in the net profitability in the previous year, I am confident that this coming year also India's banks will attain even greater heights. Sir, even though the NPAs have reduced drastically, the government has remained absolutely committed to taking stringent recovery action against willful defaulters. The debate saw very many members speaking about willful defaulters going away from the country. Fugitive offenders have also, economic offenders have also left the country. What are we doing about it? I would give a brief remark now, but I'll get into specifics
when I addressed the specific members who spoke about it. I have stated in this House several times that the write-offs don't mean a waive off by banks. I repeat that line, but then I'll elaborate on what it means actually. Write-offs do not result in waiver of liabilities of borrowers, and therefore it does not benefit the borrower. So it's not as if we waived off or the written off is actually waive off, resulting in benefiting those huge defaulters. Sir, close to the end of the debate, we saw member Ravi Chandra Vadiraju, who spoke in Telugu. And I'm grateful for one line that he said. He said, you know, under his government, till recently, which was ruling in Telangana, they have taken a lot of steps towards giving relief to the farmers. Rina Maafi, as it's known there. And Rina Maafi actually under their government had been very effective, and that they have taken care of farmers who were under severe indebtedness. And in that, I'm glad he observed, I'm not commenting on anything to do with the Rina Maafi of the TRS regime, as we would call it, the BRS regime. I'm not commenting. But one line that he mentioned, as different from the Congress's time when waiver was announced, Rina Maafi was announced, but actually half the farmers did not even get it, is an observation, if I understood his Telugu right. Did you say that, sir? So that is the point which all of us have been repeatedly saying. Announce Rina Maafi or loan waiver, but you really don't do it. Half the farmers are left without Rina Maafi, and the banks would put it on the record saying you've been covered under Rina Maafi because the Congress government had given that promise, and later, because under a one-time settlement your loans have been written off, the farmer is not even eligible for one more new loan. So instead of serving the farmers, the Congress's notorious 2008, by which we were told through the media that they won election and came back in 2009, that notorious Rina Maafi had left many farmers neither here nor there. They were not sure whether they got the Rina Maafi, and if indeed the Maafi was given, are they eligible to go ahead? No. You have a layer of small farmers looking up to the banks to give them some kind of a relief. So I want to highlight